Okay, so we are live. Hi everyone. Just give me a second. Let me check on that. Yes. Okay. Right. Mm, yes. Okay. Great. Perfect. So we are live. Hi everyone. I welcome you all to today's session. And in today's session, we're going to cover comprehensively about what we're going to cover. That is the roadmap of data science. Yes. Okay. So I'm clearly audible and visible as well. And now we can start with the class. Perfect. Right. Can you give me confirmation that am I clearly audible and visible so that we can start with the session? Hi, Gopi. Waiting for your confirmation, guys. Okay. Perfect. Perfect. Okay. Got it. Got it. Let's start with the class 9. Let me share my screen. Hi, everyone. Right. So, yes, my screen share. Perfect. Now I'm going to talk about the roadmap. Okay, what exactly is the roadmap and how you're going to tackle that roadmap? What you're going to learn about in that roadmap? Why is there? Hi, there are you. Yes. Okay. So why exactly we're studying data science, right? All these things would be comprehensively covered in today's session, right? Without further ado, let's start with the class now. Okay. Is my screen visible? No, it's not. Okay. I think it's better visible now. Mhm. Yes, okay, perfect. Now the roadmap is presently visible. Right. Without further ado, let's start with the entire class. Where is my cursor? Okay. So we're going to talk about the roadmap of data science. We're going to talk about what exactly is the field of data science, right? And we're going to also talk about data analytics as well. Now just mind my handwriting, okay? Because the thing is that I don't have. I'm using some other note writing pad right now because my one is not working, so I have not installed the drivers for that. Right, that's the reason. Okay. So without further ado, let's start with the class. We're going to talk about what exactly is the roadmap of data analytics and data science. Perfect. First of all, let me give you a brief idea on when data science came into picture, why exactly we're learning that, and all these things, right? Because once you have that image in your mind, we can further understand the classification and the need for the same. Moving on. So, I'll give you a general timeline. Around the year 1850, okay, around the year 1850, the idea of AI came into picture. And what was AI? The idea of AI was that we can use the technology of AI, we can use the concepts of AI. We already have machines with us, right? We already have smart machines with us. So, what if we teach them the concepts that we already know, right? What if we teach these concepts to them so that they can actually do the task for us? That was the general idea of AI, right? Now, obviously, that was bad idea. Moving forward, by around the time of 1850, the idea that AI can be used, the idea that we can smarten up the machines. So the idea is to smarten up the machines, smart machines. That was the idea that we came with, right? Around 1850s. Now, what happened is around 1900, 1900s.
the idea of AI was still going on, right? We did not have any conclusive idea of that. हम लोग we were still doing and we were still learning about that कि क्या क्या करा जा सकता है, what all can we do. We're not finding the way exactly to do that, right? So by the time by the time of 1950s, the idea of machine learning came into picture. The idea machine learning came into picture. So 1950s machine learning came into picture. Okay, with the idea that this mathematics portion, the mathematics portion that we already know, the mathematics portion that we already have the idea of, what if we teach those things to the machine? And then machine can do what? Machine can start with the prediction of the things, right? Once it has learned the things, it can further go on and it can start with the prediction of the entire idea. That was the idea that we came with. Okay, so 1950s we got the idea that machine can learn these things and use the concept of machine learning and further enhance our growth. Around 1975, Howard built its first Howard built its first smart first self-driving car. Smart self-driving car. Okay, and that used the concepts of machine learning. The concepts of machine learning were used a bit in these self-driving car. So here, after this, we got a little concentrative idea that yes, machine learning is something that is good, and we can further utilize them to our own benefit. Okay. Now, moving further, around the year 1990, what happened was around the year 1990, we got the general idea. We got machine learning into production. We got machine learning into production. Again, just mind my handwriting. Okay, we got machine learning into production, so that means companies started using them. There were softwares that started building on the concepts of machine learning, and we concentrately use these knowledge to actually extract meaningful output from the same. That was the idea that we went with, right? So 1990s machine learning came into production. Okay, then around the year of 2006, that's when deep learning came into production. Deep learning into production. Okay. So by the around 2006, deep learning came into production. Now, if we talk about the time gap that you can see from 1990s to 2006, what happened was, if I talk about this time period, this was the time period when from uh, we transitioned to different era. That was a different era altogether. So if you remember the 90s kids, what happened around this time and around this time was we had internet cafes. We had internet cafes, and what happened in the internet cafes, you were giving an hourly rate. So and there you were just going there and you were just learning the technology, you were just using those technologies, you were playing games, you were watching the movies and all these things, right? तो यही होता था. 90s kid can relate with this thing. क्या होता था उस टाइम पे, वी हैड दीज इंटरनेट कैफेज थे, वहां हम लोग जाते थे, अच्छा खासा आरबी रेट वगैरह रहते थे वहां पे, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वहां पे हम लोग डिवाइस यूज करते थे. एंड इफ वी एक्चुअली सी दिस एरा, 2006 वाला एरा, इस टाइम पे क्या हुआ था, मोबाइल्स फोन एकदम मतलब मोबाइल फोन सबके पास आने लग गए थे. एवरीवन स्टार्टेड यूजिंग मोबाइल फोन्स, राइट? और मोबाइल फोन बहुत इजीली एक्सेस होने लगे थे, लोग पर्सनल कैरी करने लगे थे, धीरे धीरे लैपटॉप्स का भी थोड़ा बहुत इसमें आइडिया आने लगा था. ओके, तो इस एरा में क्या हुआ, दिस वाज द एरा दैट वाज अ चेंज ऑफ अ डिफरेंट एरा. बट यहाँ पे हम लोगों ने केवल एक चीज नहीं, एरा नहीं चेंज किया. दिस वाज द थिंग दैट वाज विजिबल. एक और चीज हुई, वी ट्रांजिशन फ्रॉम सीपीयू टू जीपीयूज. अब ये क्या बोला है, सीपीयू तो नॉर्मल सीपीयू अपने जैसे होते हैं, राइट? अपने सीपीयू जैसे नॉर्मल होते हैं. वी हैव सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. हर लैपटॉप पे, हर सिस्टम में एक सीपीयू होता है ना. नाउ व्हाट इज जीपीयू? जीपीयू के आगे भी आ गया है, दैट इज टीपीयू.
and all these things are here. तो ये सब क्या है? These are faster machines जो कि same चीज को they can do the things in a much more faster manner. Correct. तो इस चक्कर में these GPUs and TPUs came into production. Now they are very helpful when you're solving a certain thing. I'll give you a general idea over it so that you can understand the ratio in which the things are changed because of these CPUs and TPUs. Okay, let's take here. क्या हो रहा है? If I am taking a model, ठीक है, if I'm taking a model and इस model के अंदर I'm training certain something, this is the model, this is the raw data that we are taking, and this is the process data that it is getting. Training the model or doing everything. Okay, if I'm talking about this thing, right, and if I'm training a normal CPU model, normal CPU, if training the data, testing the data, checking the accuracy and everything can be done in suppose 10 hours. Okay, if that is the case with CPUs, GPUs can do the same thing in 10 minutes, and TPUs can do the same thing in 3 to 4 minutes. Just see the ratio in which they are actually changing. It's like more than 1/10 of the time, right? So this was a time when we actually transitioned from normal CPUs to TPUs and all these things. So with that, what happened was our processor got much more faster. Okay, our processor got much more faster, and we actually utilize these things. So if I talk about the concept of deep learning, and the concept of further concepts that we're going to study ahead, they are actually all utilizing these concepts vividly, and without them we cannot even start with the entire thing, right? Without these things we cannot even clearly assess the idea. One second, guys. Right, so this was the place when we were. Okay, so we transitioned from normal CPUs to TPUs and GPUs, and now this is actually helpful to us so that we can actually utilize these concepts and further extend the things and do the things in a much more better manner. ठीक, 2006 में ये हुआ. Around 2010 we were introduced with the term big data. ठीक है, एंड देयर वर बिग डेटा टेक्निक्स. यहाँ पे हडूप, स्पार्क, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आ जाते हैं. ठीक है, दिस वाज द थिंग. इसके बाद क्या हुआ? अराउंड 2016 वी गॉट द फर्स्ट मॉडल ऑफ जीपीटी, फर्स्ट मॉडल मॉडल वर्जन ऑफ चैट जीपीटी. ठीक, दिस इज व्हाट हैपेंड. एंड आफ्टर दिस, ये हम लोग कब पता चला? 2019 के अराउंड में, when we were in the COVID era. When we were in the COVID era, then we actually heard about this chat GPT, है ना? उससे पहले तो किसी को कोई आइडिया भी नहीं था. And if I talk about the latest trends, latest the 2025 and upcoming में क्या हो रहा है? We have technologies like DeepSeek, Kimi.ai, है ना? These are the technologies that are coming there. We thought chat GPT was it. We thought chat GPT ने कर दिया and this is going to monetize the market. But no, अब तो ये आ गया डीप सीक एंड Kimi.ai टाइप की टेक्नोलॉजीज, LLM मॉडल्स आ गए हैं that are actually taking care of the entire thing now, right? So this is the entire roadmap that we have gone towards with. This was the general idea जहां से हम लोग start किया to what we are today. That is the entire thing. ठीक. Now, after this, what is happening after this? Let's talk about the different thing now. That is, we learned about the concept of basic concept of AI and all, right? So let's draw an entire thing so that we can actually learn these things in a much more better manner. Okay. So, okay, what's happening? The color and all. Okay, okay, okay. Okay, this is your normal AI. This is your normal AI. Got it? Now, what is happening is after this AI, we started building this. This was machine learning, right?
So this was a normal AI, and after this we started using machine learning. Now, what exactly is again machine learning? Machine learning again tackles the concept that, what is the concept that machine learning tackles? Machine learning tackles the concept where we are actually teaching the mathematical concepts to it, and we are utilizing the entire thing. Okay, just again, as I said, mind my pen tab right now. Right. So AI is again basically getting the machine smarter. Machine learning says we're actually utilizing the mathematical concepts that we're using. We're using the mathematical concepts, and based on that, we're actually utilizing them and extracting insights from that. ठीक है, that is your machine learning. Machine learning में जो मैथमेटिकल कंसेप्ट थे वो हम लोग इनको दे रहे हैं. बेस्ड ऑन दैट वी कैन सी कि हाँ, जो मैथमेटिकल कंसेप्ट हम लोग दे रहे हैं, इसके आइडिया पे मशीन इज एक्चुअली लर्निंग समथिंग, एंड फर्दर वो इस्तेमाल करके वी आर गिविंग अस द एग्जैक्ट आइडिया. ठीक, दैट इज योर मशीन लर्निंग. ओके, फिर व्हाट आई टोल्ड इज, उसके बाद जब नया एरा आया, वी ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू टीपीयूज एंड जीपीयूज. तब क्या हुआ? वी वेंट इनटू डीप लर्निंग. ठीक, नाउ द कंसेप्ट ऑफ डीप लर्निंग इज, डीप लर्निंग क्या है? टीपीयूज जीपीयूज पे काम करता है. इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स एंड लेयर्स होती है. ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज एज वेल जब हम लोग फर्दर आगे बात करेंगे. ओके, तो यहाँ पे डीप लर्निंग एंड ऑल के थ्रू वी आर लर्निंग दीज थिंग्स ऑन अ गुड लेवल. डीप लर्निंग हम लोग सीखा, एंड थ्रू डीप लर्निंग मशीन थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गई, एंड द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गई. यहाँ पे तब भी थोड़ी प्रॉब्लम सिंपलर थी, यहाँ पे आके प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स हो गई, and we were able to solve the complex problems altogether after this. ठीक, इसके बाद क्या हुआ? After deep learning, there's a new term that's in the market right now, and you all have heard this name, that is Gen AI. है ना? You have heard this name, Gen AI? We all have heard this name, Gen AI. तो what exactly is Gen AI? Again, वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे ही कि what exactly is the concept of Gen AI. But still, this is the most advanced concept, that is Gen AI. The concept of Gen AI is to actually solve the things in by doing not exactly the prediction. अभी तक ये क्या कर रहे थे? नॉर्मल अपने जो मॉडल्स एंड ऑल थे, they were predicting something. What is Gen AI doing? It is generating something, right? एक प्रेडिक्ट कर रहा था अभी तक, this is generating something. That is the idea. अब इसके बाद भी we have further specializations in it. ठीक है, स्पेशलाइजेशंस कुछ इस तरीके की होती हैं. Again, as I mentioned, just do mind my pen tab. Let me try it again once again. Okay, I'm going to erase all these things so that we can understand about these things in a much more better manner. Okay, 1 second, guys. ठीक, यहाँ तक अपने नॉर्मल कंसेप्ट चले. इधर से वी स्टार्टेड यूजिंग द एडवांस कंसेप्ट्स. दीज आर योर स्पेशलाइजेशन वाले टैब्स. यहाँ पे थोड़ा स्पेशलाइजेशन नॉल पे आ गए हम लोग. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एनएलपी. केवल एनएलपी नॉर्मल होती है. दिस इज एनएलपी, दिस इज नॉर्मल एनएलपी दैट यू हैव हर्ड. आफ्टर दैट यू हैव जनरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एज वेल. ठीक है, सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, यही पोर्शन इसके अंदर आ जाता है. दिस इज द एंटायर पोर्शन ऑफ एनएलपी, एंड दिस इज सीवी, दैट इज कंप्यूटर विजन. ठीक, तो फ्रॉम हियर these are the two specializations that we have. One is NLP and one is CV. Okay, अब इनका भी डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस हैं. सो वी गोइंग टू लर्न अबाउट दैट एज वेल कि क्या यूज केस हैं, व्हाट एग्जैक्टली दीज थिंग्स आर डूइंग इन फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स. ठीक, तो एनएलपी क्या करती है? व्हाट एग्जैक्टली डज एनएलपी डू? व्हाट एग्जैक्टली डज एनएलपी डू? Let's take some answers from the chat as well. What exactly does NLP do? एनएलपी क्या करती है? लेट्स सी कितनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को. व्हाट डज एनएलपी डू एंड व्हाट डज सीवी डू? कंप्यूटर विजन क्या करती हैं दोनों चीजें?
Anyone? Anyone? ठीक है. Okay. Let me start with the explanation then. NLP क्या करती है? The concept of NLP is okay. नमस्कार नमस्कार ठीक है बट गिव मी द आंसर एज वेल ठीक है. NLP क्या करती है? NLP focuses on natural language processing. इसमें we learn about the language. जो भी लैंग्वेज जैसे कि वी हैव पंजाबी, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई स्पेनिश बोल रहा है. ऑल दीज डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट वी हैव, हर एक लैंग्वेज को समझना, इंटरप्रेट करना, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. जितना भी टेक्सचुअल डेटा होता है, टेक्स्ट डेटा के ऊपर जितना भी एनालिसिस होता है, दिस इज डन यूजिंग एनएलपी. दिस इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ एनएलपी. एंड सीवी क्या है? सीवी इज, as I mentioned, computer vision. That means कंप्यूटर को हम लोग चश्मा या आंखें दे देते हैं. Okay, we give them eyes. We give them eyes so that it can actually understand the entire thing. ये पूरा कंसेप्ट होता है अपना. दिस इज द इंटायर डेटा साइंस. ओके, इसके अंदर प्लस जेन भी आ जाएगा इफ यू एक्चुअली स्टार्ट यूटिलाइजिंग दीज थिंग्स. नाउ इसके अंदर सेगमेंटेशन भी होता है, राइट? जैसे कि ये वाला सेगमेंटेशन हो गया. किसका सेगमेंटेशन हुआ है? दिस इज एनएलपी एंड मशीन लर्निंग. इस सेगमेंटेशन से वी कैन, ओके, सो व्हाट डज दिस डू? थ्रू दिस वी कैन डू द सेगमेंटेशन हियर. मशीन लर्निंग और एनएलपी के सेगमेंटेशन से क्या होता है? वी आर एबल टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन. अब ये सेगमेंटेशन क्या होता है एग्जैक्टली? सेगमेंटेशन इज, यू कैन अंडरस्टैंड कि इट इज एबल टू बाइफरकेट बिटवीन योर स्पैम मेल्स. ठीक है, स्पैम मेल डिटेक्शन जो होता है, दिस इज डन थ्रू दिस इटसेल्फ. सो स्पैम मेल डिटेक्शन जो है, हम लोग एनएलपी एंड मशीन लर्निंग के कंसेप्ट को यूज करके करते हैं. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनएलपी एंड मशीन लर्निंग. अगेन अगर मैं इसके अंदर और फर्दर बाइफरकेट करूं, if I start using bifurcating these things more, this the concept of NLP and deep learning. ठीक है, यहाँ पे we are able to segment the things in a much more better manner. यहाँ पे we can actually start using them to build these LLM models. The LLM models that we see, LLM models like different different models जो कि हम लोग सीख रहे थे, like जो large language models हैं, that is your like chat GPT and Gemini and Gnok. ठीक है, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल जो हैं, these are all built using the concepts of NLP and deep learning. ठीक, and after through generative AI you can even generate the things in a much more better manner. ओपन सीवी एंड मशीन लर्निंग का अगर सेम यहाँ पे मैं यूटिलाइजेशन दिखाऊं, so open cv and machine learning, if you're utilizing them, so this is able to make them see the vision in a much more better manner. ठीक है, विजन विद एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग अ सिंगल ऑब्जेक्ट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है. ओके, इफ वी स्टार्ट यूजिंग डीप लर्निंग के साथ ओपन सीवी, यहाँ पे विजन को थोड़ा सा और अपग्रेड कर देता है. सो द विजन इज अपग्रेडेड नाउ मोर, इट कैन एक्चुअली सेगमेंट टू प्लस इमेजेस. ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को सेगमेंट कर दिया था. सो इन अ सिंगल इमेज इट कैन आइडेंटिफाई दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ पर्सन, राइट? तीन चार सेगमेंटेशन करने लग जाता है. And through generative AI and CV, this is where we actually are able to use a generative portion of it, and it is able to generate these new images. तो अभी तक यहाँ पे libraries के through it is actually learning कि हाँ, these are the things that we can learn from that, and through generative AI and CV it can actually make these models. So जिसके अंदर जो text models होते हैं, जितने आपके image creation models होते हैं, जैसे कि भी आप लोग ghibli images and all बना रहे थे, right? तो सीवी के थ्रू इट इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, एंड इट इज लर्निंग देयर, एंड जनरेटिव एआई के थ्रू इट इज जनरेटिंग दैट कंटेंट ऑल टुगेदर. सो दिस इज द इंटायर थिंग दैट वी हैव इन डीप डेटा साइंस. ठीक है, डेटा साइंस के अंदर इतनी ही चीजें हैं, एंड दिस इज द इंटायर थिंग ऑफ डेटा साइंस. नाउ once you have understood this entire thing,
Now you can focus on the exact roadmap. Now we're going to talk about the exact roadmap that you have to follow. Roadmap of data scientist. Now यहाँ से roadmap start होता है. Okay. Roadmap में सबसे पहले you have to learn a programming language. A programming language. Okay. Spelling गलत है, I know. ठीक है. अब इसके अंदर programming languages like Python and R is very heavily used, and that too Python is very heavily used first of all in the industry. ठीक. तो what exactly is Python? Python के अलावा भी कई सारी languages हैं, but why exactly we're using Python? Anyone? Why we using Python itself? Any answers? Why are we only using Python where we have languages like C++ or Java? इस तरीके से कई सारी languages है ना. Why are we utilizing only Python? Anyone? Why only Python? Guys, be a little attentive in the class. Okay? Keep responding with your answers. Okay. ठीक है. Syntax and that rigid compared to other language. ठीक है. Syntax and rigidness. That's one of the things. That is one of the things. कि हाँ, that is a plus point. कि हाँ, compared to other languages, Python is comparatively easy. But that's not the perfect answer, Kiran. The perfect answer is the rich library base. इंटरव्यू से पूछा जा सकता है आपसे कि वाई आर ओनली स्टार्टिंग पाइथन, तो आप ये नहीं कहोगे रिजिड एंड ऑल कि ये लैंग्वेज बहुत रिजिड है, सिंटैक्स काफी रिजिड है, नहीं. इट हैज अ रिच लाइब्रेरी बेस. फर्स्ट पॉइंट इज दिस. सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि सिंटैक्स इज कंपैरेटिवली इजी. दैट्स अ प्लस पॉइंट दैट यू आर गेटिंग. दैट्स अ प्लस पॉइंट दैट यू आर गेटिंग. द मेन थिंग इज कि इसका रिच लाइब्रेरी बेस. नाउ पाइथन के अंदर खूब सारी लाइब्रेरीज हैं. You have data manipulation libraries and data cleaning libraries. Okay, I'll tell you, Bevo. I'm working as a data analyst. Can I transcend machine learning? Yes, you can definitely do that. You can definitely do that. And this session is going to help you do that. It is going to give you the perfect roadmap. So it has different data manipulation, visualization, and all the manipulation, adjustment, cleaning. All these libraries are pre-built here in data science. Okay. R is also used, but it is not that widely used. Take so first thing that is to learn about a programming language. After that is to learn about Git. ठीक है. ये तो लोग कहेंगे गिट एकदम से गिट कहाँ से आ गया, तो रोड मैप डेटा साइंस का है, बट गिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. द कंसेप्ट ऑफ गिट, गिट कैसे यूज होता है. सो if you're targeting the roles of data science, there are a few components. This is again non-technical few thing. आपका पहला रेज्यूमे होता है. ओके. रेज्यूमे में यू आर अटैचिंग योर लिंक्डइन. ठीक है. तो रिक्रूटर्स चेक दिस लिंक्डइन आईडी. They open up your LinkedIn IDs and they're going to check the entire thing, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपने मेंशन किए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके रेज्यूमे नीचे प्रोजेक्ट मेंशन हो गए. प्रोजेक्ट्स में आप यू आर गोइंग टू गिव योर गिटहब आईडी. तो यहाँ से दे गोइंग टू चेक योर गिट एज वेल कि आपकी गिट कितनी एक्टिव है, कितने उसमें पार्ट्स डाल के रखे हैं आपने, कितने प्रोजेक्ट्स किए ऑल. तो दिस इज द इंटायर इकोसिस्टम दैट यू हैव. यू हैव योर रेज्यूमे, यू हैव योर गिटहब, यू हैव योर लिंक्डइन. इन सब पे भी काम करते रहना साइड बाय साइड. जितने प्रोजेक्ट बना रहे हो इन सबको गिट पे डिप्लॉय एटलीस्ट करते रहो. सो दैट गिट कैन ऑल्सो बी योर पर्सनल डायरी. सो यू कैन हैव एन आइडिया कि हाँ ये सब चीजें मुझे आती हैं. ठीक. अगेन अनकन्वेंशनल थिंग दैट इज DSA, the concept of DSA. अब अगेन आप लोग कहोगे DSA सर, DSA की तो कभी कुछ बताया नहीं गया है. जब भी हम लोगों ने किया तो DSA तो कभी कुछ बोला नहीं गया है. But I'll tell you this. DSA is what? Data structures and algorithm. Why is it used?
to actually understand your problem solving skills, to enhance your problem solving skills. ठीक, इन पे भी काम करना है. Okay, if I give you the real life example of it, okay, if I give you the real life example of it, let me tell you about that. Companies like Google, Microsoft, Facebook, कुल मिला के जितनी भी फैन कंपनीज हैं, ठीक है, जितनी भी फैन कंपनीज हैं, जितनी भी टॉप एमएनसीज हैं, जब भी दे आर रिक्रूटिंग फॉर अ डेटा एनालिस्ट और अ डेटा साइंटिस्ट, these fan companies are also holding around multiple rounds होते हैं. One round is there for DSA as well, not to check your DSA skills कि DSA में आपको कितना आता है. No, they are actually checking your logical skills. यहाँ पे लॉजिकल स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है कि आप कैसे टैकल कर रहे हो प्रॉब्लम को, हाउ एग्जैक्टली यू आर टैकलिंग अ सर्टेन प्रॉब्लम. दैट्स आल्सो थिंग दैट इज बीइंग चेक्ड इन दीज थिंग्स. ये नहीं कि आपको स्टैक आता है कि नहीं, व्हाट इज स्टैक, आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे, नहीं. हाउ एग्जैक्टली यू आर टैकलिंग अ सर्टेन प्रॉब्लम, क्या लॉजिकल वेज हो सकते हैं, क्या डू यू हैव अ सिंगल रिजिड वे और डू यू हैव मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम. ओके, एंड मल्टीपल वेज आपको आइडिया है कि नहीं, कि आपको केवल सिंगल ही आइडिया पता है हमेशा के लिए कि इस प्रॉब्लम को इसी तरीके से करूँगा मैं, नहीं. So that is the concept of DSA. Okay? And DSA is asked in industries in these kind of companies because of this. Now I told you that. ठीक, after that is SQL. अब फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको यार SQL, आप डेटा एनालिस्ट की बात करोगे, डेटा साइंटिस्ट की, दोनों की. Okay, दोनों की. These are the skills that are needed. Why? ठीक है, एज अ डेटा साइंटिस्ट एज वेल, डेटा एनालिस्ट में तो आपको नीड होती है, एज अ डेटा साइंटिस्ट एज वेल यू गोइंग टू यूटिलाइज दीज डीबीज. आपको डेटा बेसिस को मैनेज करना आना चाहिए. ठीक है, यू शुड नो कि हाउ एग्जैक्टली डेटा बेसिस आर बीइंग मैनेज. तो एसक्यूएल इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. एसक्यूएल के अंदर यू जस्ट सिंपली राइट सर्टेन पीस ऑफ कोड एंड बेस्ड ऑन दैट इट कैन फाइंड द आंसर्स फॉर यू. यस भैया, my branch is BTech CSC with specialization data science and CGC. Sanjeevi, please guide me for the best career. I'll guide you, don't worry. पहले आप एक बार रोड मैप समझ लो, after that I'll guide you. हो जाएगा, कोई इशू नहीं है. Okay? So, as a data scientist, you should know database, how to manage your databases. And if you're actually targeting a data analyst profile, तब तो फिर आपको ये need ही है, तब तो SQL पूछा ही जाएगा. After this, again, the concept of mathematics and stats. इनसे तो नहीं भाग पाओगे आप. ठीक है, अगर आप इस फील्ड में घुस रहे हो तो आप इनसे तो नहीं भाग पाओगे. ये चीजें तो आपको अब आनी ही चाहिए. ओके, आई विल टेल यू दिस. इसके अंदर भी एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं, आई गिव यू द रिकैप. ठीक है, इसके अंदर भी क्या क्या चीजें आपको नीडेड है. कंसेप्ट लाइक लीनियर अलजेब्रा. Okay, concepts like linear algebra, then you have calculus, statistics, and और कुछ probability. These are the core concepts that you should know in the mathematics portion. ठीक, तो मैथ्स पोर्शन में आपको ये चीजें तो आनी चाहिए. आप इनसे भाग नहीं पाओगे. कैलकुलस आपने पहले पढ़ा है, स्टैट्स पढ़ा हुआ, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ, प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है, इनसे भाग नहीं पाओगे इन चीजों से. ठीक, यहाँ पे you'll have to learn about these things. Okay, let's start with a quick recap so that we can again transition to where we were. First, we learned about the entire roadmap. ठीक, first we learned about the entire roadmap, that what exactly how it started. So 1850s में first AI के बारे में बात करना start किया. 1900s में AI का idea आया. 1950s में we started using the concept of machine learning. 1975 में Harvard actually started utilizing them. 1990s में AI came into picture. Machine learning came to production. 2016 में 2006 में deep learning came to production, and from this era we transitioned from the era of CPU to GPU. जैसे GPU आया, processing power got strong and we were able to utilize that here. 2010 में big data आ गया. 2016 में first model of chat GPT आ गया.
2019 में कोविड एरा भी ट्रांजिशन टू कोविड एरा। कोविड एरा के बाद लेटेस्ट में वी लर्न अबाउट चैट जीपीटी देन। इस समय लेटेस्टली वी आर सीइंग कीमी डॉट एआई एंड डीप सीक। ठीक, दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थिंग्स। नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट द एंटायर इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम ऑफ अ डेटा साइंस, ऑफ डेटा साइंस, राइट। तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग दैट केम वाज एआई, देन मशीन लर्निंग, देन डीप लर्निंग, उसके बाद आया जनरेटिव एआई। नाउ जनरेटिव एआई प्रॉपर्ली कल की क्लास में इसे डिस्कस होगा। ठीक, आफ्टर दैट वी हैव स्पेशलाइजेशंस लाइक एनएलपी एंड सीवी। एनएलपी के अंदर पीयूजी भी होता है, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन। ठीक है, दिस इज डन व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग द डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड जनरेटिव एआई। तो मशीन लर्निंग के साथ जब एनएलपी कंबाइन होता है, that is when segmentation comes into the picture. Segmentation मतलब spam mail detection, ठीक है। This is all the concept of segmentation that we learn. तो spam mail detection जैसे नहीं आता आपके spams में mail आते हैं, this detection is done through utilizing technologies like NLP and machine learning. After that, deep learning is such हम लोग we combine NLP, then we start building LLM models. ठीक, फाइनली जनरेटिव एआई के साथ करते हैं, तो दैट्स अगेन बेटर केस में। सीवी क्या है? कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में जब हम मशीन लर्निंग के साथ करते हैं तो केवल एक ही ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहा होता है। ठीक, व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग डीप लर्निंग के साथ, देन 2+ इमेजेस को जो है क्लासिफाई करना स्टार्ट कर देता है। मतलब एक ही इमेज के अंदर इट कैन क्लासिफाई दैट दिस इज एन एनिमल, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ ह्यूमन, दिस इज अ कोट, दिस इज अ बेल्ट। इस तरीके से कैन स्टार्ट segmenting multiple things. Gen AI के साथ when it start doing that, so it is actually able to predict and build these new things altogether. After that, we started with the roadmap of data science. First is you should know a programming language, and that too there are two languages, Python and R. Python has a rich library base. That's the reason ये Python काफी needed होती है library case में, and that's the reason हम लोग languages like C++, Java नहीं use कर रहे हैं. Added point क्या है कि it is syntax is very easy. Okay, इसके अंदर कई सारी libraries हैं that is helping you in data manipulation, visualization, everything. आप आफ्टर दैट गिट भी सीखना जरूरी है। नाउ व्हाई गिट? क्योंकि गिट के अंदर पूरा इकोसिस्टम है। यू हैव योर रेज्यूमे, यू हैव योर लिंक्डइन, यू हैव योर गिटहब एंड यू हैव दीज प्लेटफॉर्म्स। इन सब प्लेटफॉर्म से ओवरऑल सबको एक साथ काम करते रहना ताकि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी होती रहे। अनकन्वेंशनल थिंग, डीएसए। डीएसए भी सीखनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, जैसे जो भी इतनी फैंग कंपनीज हैं, दे आर एक्चुअली होल्डिंग दीज इंटरव्यू राउंड्स फॉर डीएसए टू चेक नॉट द स्किल्स ऑफ डीएसए, मतलब नॉट एग्जैक्टली कि आपको डीएसए आता है कि व्हाट इज लिंक लिस्ट, व्हाट इज स्टैक, उसका आंसर नहीं दे पाए, नहीं। दे जस्ट चेकिंग योर एनालिटिकल स्किल्स ऑन हाउ एग्जैक्टली यू आर टैकलिंग अ सर्टेन प्रॉब्लम। ठीक, क्योंकि अगेन एंड ऑफ द डे डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस में बॉयल डाउन होकर आपके लॉजिकल स्किल्स पे ही आता है चीजें। So you should have the logic skill. After that is SQL. So you should have a fundamentally strong knowledge of SQL. क्योंकि SQL क्या है? As a data scientist, you should know how to manage a DB. क्योंकि there you're going to actually work on these big DBs. ठीक? After this is mathematics portion. Now mathematics is needed a lot. इससे नहीं भाग पाओगे आप। मैथ्स में लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। Okay, this is the portion that we have covered up till now. A heaver. So I just gave a recap to the entire thing, and after this we're going to start with few more things that is needed. Okay, let's now start with understanding a few more things that is not discussed. मैथ्स तक तो करनी है। ठीक, मैथ्स के बाद क्या है? अगेन यू हैव एन ऑप्शन, दिस इज ऑप्शनल, प्रॉपरली ऑप्शनल, and that is using and learning these BI tools. BI tools, business intelligence tools like Tableau and Power BI. These are the things that are again optional. अगर आप चाहते हो then you can learn these Tableau and Power BI. If not, then that's perfectly okay as well. क्योंकि इंडस्ट्री में they are actually needing these kind of people जो कि जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो वो कर तो ले रहे हो। There are few technical people in the company. Technical person ज़्यादा नहीं रहते हैं। Non technical person जो business end पे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, they are present. तो दे वांट सर्टेन इंडिविजुअल जो भी उन्होंने एनालिसिस की है
they can actually visualize that and they can show that and tell them to the non technical person as well. तो यहाँ पे भी ये जॉब्स के लिए काफी needed है, क्योंकि सबको आपके एनालिसिस नहीं समझ में आएगी. सो यू हैव टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ डैशबोर्ड्स, एंड डैशबोर्ड बिल्डिंग के लिए पावर बी एंड टैबलू आर योर परफेक्ट बीआई टूल्स. ठीक. ओके. आफ्टर दिस, these again, as I mentioned, are your optional things. After this is where you actually start using the concepts of machine learning. ठीक है. यहाँ पे आके आपको मशीन लर्निंग स्टार्ट होता है ढंग से. तो यहाँ पे you start using the concepts of machine learning. You learn the concept of machine learning. Now again, the concept of machine learning is segmented. ठीक है. It is segmented into supervised, supervised and unsupervised. रिग्रेशन भी होता है, नो प्रॉब्लम नहीं है. सुपरवाइज के अंदर यू हैव लेबल डेटा. ठीक. एंड इसके अंदर अनलेबल डेटा होता है. यहाँ पे दे ऑलरेडी हैव सुपरवाइजर दैट इज मैनेजिंग एंड चेकिंग ऑल द एक्यूरेसी. यहाँ पे अपने आप मशीन स्टार्ट करती है. सो यू शुड लर्न अबाउट दीज थिंग्स कि सुपरवाइज क्या है, अनसुपरवाइज क्या है, इसके अंदर कौन कौन से मॉडल्स हैं. जैसे कि इफ यू स्टार्टिंग विद फर्स्ट दैट इज लीनियर रिग्रेशन, तो लीनियर रिग्रेशन के बारे में सारी चीजें पढ़ लो. फर्स्ट मॉडल के बारे में ऑल द थिंग्स लाइक उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, all the different components that are being used in linear regression, logistic regression, इन सारे components के बारे में पूछ लो. समझ लो कि ये components के बारे में पूछ सकते हैं इंटरव्यूज में. ऐसे सुपरवाइज है, अनसुपरवाइज है, रिग्रेशन है, इन सब क्या क्या डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, कौन कौन से एल्गोरिथम्स नीड होते हैं, तो ये सब एक बार पढ़ लो. दीज आर द कंसेप्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग पढ़ लो इस हिसाब से. आफ्टर दिस इज डीप लर्निंग. ठीक. द कंसेप्ट ऑफ डीप लर्निंग अगेन, एज आई मेंशन, यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं. सपोज दीज आर योर नेटवर्क्स. बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ. दिस इज सपोज योर न्यूरल नेटवर्क्स. somewhat like this, you can get the idea. ये फर्स्ट लेयर है, दिस द फर्स्ट लेयर, दिस द हिडन लेयर, दिस द आउटपुट लेयर. एंड इसके अंदर द कंसेप्ट ऑफ डीप लर्निंग इज टू एक्चुअली बिल्ड अ ह्यूमन लाइक ब्रेन. ह्यूमंस के में क्या होता है कि वी हैव ब्रेन. द ब्रेन फॉलोज द पैटर्न ऑफ दीज न्यूरल नेटवर्क्स. सो न्यूरल नेटवर्क ही काइंड ऑफ यहाँ पे बिल्ड किया था. दीज आर योर न्यूरल नेटवर्क्स. तो द कंसेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स इज बीइंग यूज्ड. दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ डीप लर्निंग. अब डीप लर्निंग के अंदर भी यू हैव CNN. ठीक है. कॉन्वोकेशनल न्यूरल नेटवर्क. देन यू हैव RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स. ठीक है. सो लर्न अबाउट दीज प्रिंसिपल. अब CNN के बारे में जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो CNN क्या है, CNN कैसे काम करता है, कंसेप्ट ऑफ CNN इज वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक. CNN पढ़ना स्टार्ट करो, फिर RNN के बारे में समझो. RNN क्या है, CNN का बाईपास क्या है, लाइब्रेरीज लाइक YOLO एंड ऑल. ठीक है. तो ये सब नई नई चीजें दैट इज कमिंग इनटू द इंडस्ट्री. सो दैट यू कैन ओनली अंडरस्टैंड इफ यू actually step inside the industry. And after this, once you're done with all of these things, then you can actually go for, इतना कर लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप एक नॉर्मल जो है डॉक्टर बन जाओगे. ठीक है. नॉर्मल डॉक्टर नहीं बनते हैं, जो भी MBBS कर लेते हैं वो सब एक नॉर्मल डॉक्टर बन जाते हैं. ठीक. एक जनरल डॉक्टर बन गए, एक जनरल डॉक्टर बन गए. दिस इज ओके. अगर आपको स्पेशलाइजेशन करनी है, कुछ लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, लाइक हार्ट में, स्टमक में, एब्डोमेन में, फेस में, इस तरीके से दे हैव डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस. इसी तरीके के इसके अंदर भी स्पेशलाइजेशंस है. वन इज NLP, अनदर इज CV. दो तरीके सेगमेंटेशन है इसके अंदर. वन इज NLP एंड वन इज CV, जो मैं हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं. ठीक. तो NLP या CV में कुछ भी एक पकड़ लो, जरूरी नहीं कि दोनों ही पकड़ो. दैट्स टोटली योर आइडिया. इफ यू वांट यू कैन लर्न बोथ, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगेन टोटली योर कॉल. NLP सीख लो, CV सीख लो. दिस इज फोकसिंग मोर ऑन द टेक्स्ट पोर्शन जो हमने ऊपर बात की थी. दिस इज फोकसिंग मोर ऑन द विजन पोर्शन, इमेज विजन पोर्शन. ठीक.
तो अंडरस्टैंड योर कॉलिंग की किस चीज की नीड है एंड यूटिलाइज दैट। ठीक, दिस इज द एंटायर थिंग ऑफ रोड मैप, दिस इज द एंटायर रोड मैप। ठीक, अब इसके अंदर दे हैव डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, इन सबको यूटिलाइज कर लो, देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट ट्रांसफार्मर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। अब इसके अंदर यू विल फाइंड फ्यू मोर थिंग्स दैट आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, यू आर गोइंग टू लर्न अ फ्यू मोर थिंग्स दैट आर नॉट गिवन। एंड इस इंडस्ट्री में क्या कहता है कि यू हैव टू बी updated with the current trends, updated with the current trends, that is very needed, updated with the current trends. Being updated with the current trends is the most important thing in this, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि वी लर्न अबाउट चैट जीपीटी एंड ऑल। ठीक है, तो वी थॉट कि चैट जीपीटी वाज इट, चैट जीपीटी से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट सडनली एक मॉडल आ गया दैट इज डीप सीक। डू यू नो एग्जैक्टली द थिंग कि डीप सीक इतना फेमस क्यों है? डीप सीक इतना फेमस इसी चक्कर में है बिकॉज जो अपना चैट जीपीटी का जो बेस्ट मॉडल है, जो कि ओ थ्री मिनी है, ओ थ्री मिनी है या फिर शायद कोई और दूसरा मॉडल है, दैट इज एक्चुअली गिविंग यू द बेस्ट एनालिटिकल स्कोर्स। जब आपको कोई कोडिंग पोर्शन लिखवाना होता है, सो यू यूजिंग दीज काइंड ऑफ मॉडल्स एंड दिस इज मॉडल इज डूइंग परफेक्टली गुड। इसका एक्यूरेसी स्कोर शायद आया था 64 या 65% के अराउंड। ठीक, नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डीप सीक एंड दिस इज टोटली पेड, पेड वर्जन के अंदर आ रहा है ये सारी चीजें। डीप सीक का जो फ्री मॉडल पहला ही R1, उसकी एक्यूरेसी है 78%, and this is free coding की बात if I'm talking about, there's 78%, this is totally free and this is the first model that they have done। और ये भी जो उसका ओनर, if you see the TED talks and all of the ओनर का ये कहना है कि I was free, I was free, कुछ नहीं करने के लिए था तो मैंने यही बना दिया। दैट इज द लेवल ऑफ आइडियाज दैट पीपल ऑलरेडी हैव। ठीक, तो अगर ये ढंग से करना स्टार्ट कर दे, फंडिंग उठाना स्टार्ट कर दे, एक्चुअली बिल्डिंग द स्टार्ट थिंग, तो सोचो कि ये 78 से 98 तक तो आराम से जा सकता है। एंड देयर इज अ ह्यूज गैप है, ये 78 98 लग तो रहा है 20% के, 20% इज अ वेरी बिग थिंग इन दिस। सोचो कोई 100% एक्यूरेसी वाला मॉडल आ जाए, कभी गलत नहीं होगा मॉडल, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, सो वी आर डेल्विंग टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इन सब चीजों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, राइट? तो अगेन दैट इज could be dangerous and all, तो अब इसमें क्या ही बात करें। ठीक, now let's talk about a few questions, so that was the entire thing। now let's take a few questions that you have and then we can wrap up the entire thing। तो AI can replace data science jobs, अगेन ये क्वेश्चन ही बहुत ही रिडंडेंट है। ठीक है, द क्वेश्चन इज वेरी रिडंडेंट, सेम इज द आंसर, मे और मे नॉट, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? अगेन द बेस्ट थिंग, अगर यहाँ पे फिर से आप वही चीज अगर सुनना चाहोगे, द बेस्ट थिंग टू डू इज नॉट टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स बट टू गेट इनसाइड द इंडस्ट्री, get inside the industry and get inside the industry and be in the top 10%। अगर आप हर इंडस्ट्री में जाए, कोई भी टेक स्टैक हो, जैसे कि देयर आर टेक स्टैक्स जो कि लोग कह रहे हैं कि टेक स्टैक जो डेड हो रहे हैं आजकल, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, ऑल दीस थिंग। ठीक है, तो डेड कुछ नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट दैट अगर आप उस फील्ड में भी टॉप के 10% में रहोगे तो आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी। हर चीज का ये है कि ह्यूमन एआई एक पोर्शन तक काम कर पाएगा, उसके आगे ह्यूमन की नीड है ही है वहां पे, तो वो पोर्शन तो नहीं जाएगा। एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस योर जॉब, एआई इज गोइंग टू रिप्लेस योर जॉब इफ यू आर नॉट डूइंग द जॉब यूटिलाइजिंग एआई। अगर आप एआई यूज करना स्टार्ट कर दो, क्या होता है इंडस्ट्री में, व्हाट हैपेंस इन द इंडस्ट्री इज वी डोंट राइट द फुल कोड, हम लोग पूरा कोड नहीं लिखते हैं, वी टेक सर्टेन पोर्शन ऑफ कोड फ्रॉम चैट जीपीटी, चैट जीपीटी हम लोग दे देता है कुछ कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स हम लोग अलग अलग जगह से ले लेते हैं एंड बस कंपोनेंट्स को कंबाइन करने वाला एंड चेकिंग वाला, क्रॉस वैलिडेट करना कि जो उसने आंसर दिया वो सही है कि नहीं, दैट इज द पोर्शन दैट वी टेकिंग इन कंसिडरेशन। ठीक, if you're actually utilizing the concept of AI, AI is not going to take your job. It's going to fasten up your job as well. ठीक, भैया my branches technical CSE specialization data science and CGC, please guide me for the best career। ठीक, career guidance that's a thing। अगेन डेटा साइंस में बहुत लोग घुस रहे हैं, बहुत लोग ट्रांजिशन कर जा रहे हैं जस्ट बिकॉज इट्स अ हॉट टर्म राइट नाउ एंड एआई जॉब ले लेगा, अगर एआई नहीं सीखा तो मेरी जॉब चली जाएगी, ऑल दीस थिंग्स। ये सब चीज़ों पे ना फोकस करो। ठीक है,
इफ यू आर एक्चुअली गेटिंग इनसाइड दिस फील्ड, बस एक कॉलिंग के चक्कर में आना, ठीक है, कि जो फील्ड में मैं घुस रहा हूँ, इज इट समथिंग दैट इज यूटिलाइजिंग, इज इट समथिंग दैट आई एम एक्चुअली लर्निंग, इज इट समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग इन फॉर द फ्यूचर, बिकॉज अगर नहीं हो तो इस फील्ड में बोर हो जाओगे। थोड़े से कंसेप्ट सीखोगे, फिर आपको लगेगा क्या पढ़ रहा हूँ मैं, छोड़ो, बोर हो जाओगे, फिर पढ़ नहीं पाओगे उन चीज़ों को, ठीक। तो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। अगर कोई कॉलिंग मिल रही है इसमें कि हाँ ये मजारी कर रहे हैं, जो भी आउटपुट मिल रहा है, दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल टू मी, अगर ये कंसेप्ट रख रहे हैं, देन तो गेट इन साइड दिस फील्ड इज वेरी गुड। अदरवाइज फाइंड योर कॉलिंग, ठीक। सो डेटा साइंस में क्योंकि इस समय नाम बना हुआ है, इस चक्कर में ना घुसना, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स। बाकी फील्ड्स बहुत अच्छी हैं, बट अगर घुस रहे हो तो आई हैव गिवन यू द इंटायर करियर रोड मैप। स्टार्ट करना स्टार्ट करो मशीन लर्निंग एंड ऑल से, तो मशीन लर्निंग तो करनी है, उसके आगे डीप लर्निंग का थोड़ा देखो, स्पेशलाइजेशन तक जाओ, ठीक है। नीश स्पेसिफिक जॉब्स भी आती हैं इसमें, यू हैव नीश स्पेसिफिक जॉब्स, लाइक सपोज इफ यू आर एंटरिंग फॉर एनएलपी इंजीनियर्स ओनली, ओपन सीवी इंजीनियर्स ओनली, तो इस तरीके की भी जॉब्स हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं मार्केट में, ठीक है। जस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन कि आपको क्या करना है, रेस्ट याशा हैव गिवन द एंटायर रोड मैप, ठीक है। हेलो सर, यू आर वेरी स्मार्ट, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कोई और डाउट्स किसी को? अदरवाइज वी कैन रैप अप दिस एंटायर थिंग। Any other doubts, anyone? No doubts? ठीक है, okay, okay. Okay, I'm assuming that you guys have no further doubts. Data science important ML ALGI algorithms. Important machine learning algorithms you're talking about? Important वही algorithms है जो कि आपकी basic algorithms है, like your initial algorithm like logistic regression, linear regression, ठीक है। ये सब आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं, इन सब कंसेप्ट को एक बार पढ़ लो, ठीक। एंड इन सबको थोड़ा डीपली पढ़ लेना कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि यू हैव ग्रेडियंट डिसेंट एंड ऑल इन लीनियर रिग्रेशन। तो पहले तो लीनियर रिग्रेशन समझो, क्या है लीनियर रिग्रेशन, क्या एग्जैक्टली मॉडल का नाम है एंड ऑल। फिर ग्रेडियंट डिसेंट इसके अंदर यूज हो रहा है, तो ग्रेडियंट डिसेंट मैंने पूरा पढ़ डाला, व्हाट इज ग्रेडियंट डिसेंट की फर्स्ट की दो तीन एल्गोरिथम्स के बेसिस पे इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्दर इफ यू आर गेटिंग इनसाइड दिस फील्ड, तब तो बहुत सारे मॉडल्स ऑलरेडी बने हैं, जस्ट हैव टू यूटिलाइज देम। बस उनको डायरेक्टली इंपोर्ट कर लो एंड काम करना स्टार्ट कर दो। That's the thing. So just learn a few things about these first few uh, algorithms, Ansh, and then you're good to go. एसक्यूएल, डीएसए, डेटा साइंस सब एक साथ कैसे मैनेज करें, ठीक है। दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप, ठीक। एंड आई एम जस्ट थिंकिंग, जब मैं इन सब चीज़ों को बता रहा हूँ, ठीक, आई एम टेकिंग द कंसिडरेशन कि आपको 2 महीने तो लग जाएगा डीएसए में, 2 महीना लग जाए, 1 महीना लग जाएगा एसक्यूएल में, 2-3 महीने लग जाएंगे पाइथन में, राइट, एंड 3-4 महीने लग जाएंगे एमएल में। तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव 6 मंथ्स की गाइड, दिस टोटल 6 मंथ्स गाइड। सो टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, ये नहीं कि बहुत ही ऐसा नहीं हो जाएगा 10 दिन के अंदर आप सब कुछ कर लोगे। दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव गाइड। अगर आपको लग रहा है कुछ चीजें स्किप कर सकते हो, लाइक यू प्रॉपरली फंक्शनिंग ऑन डेटा एनालिस्ट जॉब, डेटा एनालिस्ट जॉब में, देन यू कैन टेक इनटू कंसिडरेशन केवल 4 एलिमेंट्स। वन इज your Excel, SQL, Python with libraries, and Power BI Tableau. That's it. ये चार components and you're good to go for analytics profile. Science में if you're entering, then you have to know the concept of machine learning, deep learning, ठीक है, NLP, all these things you should know about, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, what is CNN, what is RNN, ये सारे कंसेप्ट आपको पहले पढ़ लेने चाहिए। इसी के अंदर if you have the idea of SQL, then you can try to integrate those DB technologies as well. So that gives you an edge. And DSA में भी अगर आप if you're going for a product based company, वहाँ पे DSA पूछेंगे आपसे। तो that is the reason. बाकी छोटी छोटी कंपनीज में नहीं पूछेंगे आपसे। They are just going to ask you technical questions on data science, not DSA. ठीक। So शिवांश, I'm taking the consideration, अगर आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हो, it is going to take a few amount of time for you, ठीक। बट अगर कर लिया आपने ढंग से, देन यू विल बी वेरी गुड, आराम से कोई भी कंपनीज यू कैन क्रैक, ठीक। तो हाफ हार्टेडली ना करना चीजों को, अगर कर रहे हो तो पूरा ही करना, ठीक।
Okay. Any other questions? Okay. I think questions wrap हो गए हैं. I think we're done with the questions. ठीक है. So I think we're done with the questions. That's it for today's session. And कल भी एक session लगा है. We are going to discuss the concepts of generative AI. ठीक, what exactly is generative AI? अभी तक उन्होंने normal data science की बात की है. Next question is generative AI. I want to join Noida Geeks to Geeks office for data science. Is the right time? I'm in the fourth semester. Offline branch for data science and machine learning engineer. Is it the right time? I'm in the fourth sem. Yes. ठीक है. If you're in the fourth sem, that is in second year. ठीक है. अगेन आपके पास अगर टाइम है एंड यू आर वेरी डेडिकेटेड टू दी स्किल्स, पहले एक बार अंश व्हाट आई एडवाइस यू, एक बार पहले इस फील्ड में थोड़ा सा पढ़ के देख लो खुद से. अगर मजा आ रही है तो फिर आ जाओ, देन जॉइन इट. टाइम नहीं देखा जाता है फिर कि ये सही टाइम है, एम आई टू यंग, एम आई टू ओल्ड. नहीं, सभी लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं. ठीक है, छोटी एज वाला भी ट्रांजिशन कर रहा है, बड़ी एज वाला भी ट्रांजिशन कर रहा है. तो टाइम इज नॉट द थिंग. इफ यू हैव टाइम फ्रॉम, if you have time to learn something, then there is no age gap. ठीक, तो फिर टाइम का प्रॉब्लम नहीं है. एक बार लेकिन थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में, इफ यू आर एक्चुअली फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग. वरना अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगे तो फिर आप पूरी क्लास आपको बोरिंग लगने लग जाएगी. तो एक बार इसको पढ़ लेना, अदरवाइज ज्वाइन हियर, नो प्रॉब्लम्स. टाइम नहीं देखा जाता है फिर. ठीक. So that's it for today's session, guys. And कल का जो सेशन हो रहा है, we are going to further talk about generative AI. Generative AI का इसे हम लोग dissection करेंगे, generative AI क्या करना है, and why we learning generative AI and the model previous and all these things. ठीक. वहाँ पे थोड़े concepts of RNN and जो important concepts है like auto completion, इन सब के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें कर लेंगे. So you'll have a general idea कि चीजें कैसे काम कर रही हैं. ठीक. With that in the idea, let's wrap up this meeting. Thank you everyone for joining. Thank you for giving your entire time and listening to my rant for the past 1 hour. ठीक है. I hope that was helpful. I hope that was helpful. आपने 1% भी, अगर एक बंदे ने भी 1% कुछ सीख लिया है, so I'm very grateful. ठीक. So with that in the idea, thank you everyone, and I'll see you tomorrow, same time, 3 to 4. Okay. Thank you everyone. Thank you. Okay, 1 second. Thank you. Okay. After receiving numerous requests to bring back the 90% refund offer, we have decided to do exactly what you have said. We are excited to announce our highly demanded 390 challenge. The rules remains the same. Complete 90% of any course within 90 days and get 90% refund. So let your passion for programming translate into a high-paying career with the 390 challenge.